या फिर live? I'm sure we're live. Yes. Hi, everybody. This is Ramsha. Welcome to the orientation for the Design Game Jam Out of Thin Air. Some of you might know me already. I'm Ramsha Hassan. I am the Manager Learning Initiatives. I look into all the learning initiatives that MLabs does within Mindstorm. We're going to officially kick off the orientation. I'm just going to share my screen. I have prepared a slide deck for you guys to give you more information into what we're doing and what the Design Game Jam is all about. So here we are. Yeah. So this time, I would also like to thank our partners, PSI Pakistan and VIA, who we're partnering with on this Out of Thin Air. We have already done 2 versions of the Out of Thin Air in IBA Karachi, and this is the first time we're doing one in Lahore, and we're all super excited to host you at MLabs. Studios के अंदर event हो रहा है MLabs की space में, और we have planned a very fun weekend for all of you, and I can assure you कि आप लोग bored नहीं होंगे. आप लोग यही कहेंगे कि time खत्म क्यों हो गया इतनी जल्दी. So yeah. Okay, so guide to victory. Here is a bit of what we will be discussing today. I'll tell you about Out of Thin Air. I will tell you about Mindstorm and PSI. And going forward, I'll tell you कि हमारी theme क्या है, हम सारी communication किस तरह करेंगे, ideation किस तरह करनी है, deliverables क्या हैं, और ताकि आपको थोड़ा बेहतर idea हो जाए कि what to expect. So when you show up on Saturday at MLabs, what are we going to do? So first about Mindstorm Studios. So Mindstorm Studio, one of the largest game development studios in Pakistan, and the mission has always been to create very high quality products through constant product and market innovation. So not a lot of people or studios in Pakistan are doing that, and usme, there's a lot of effort on our part to sort of put out products that we believe in, products that are high quality, and products that are fun to play. So that is what we're doing. And even when you have these ingredients, it's very important to have like a good publisher. And currently we are working with Lion Studios, which is one of the largest publishers in the world. And it's based in US. And we've been working with them for the last 2.5 years, 3 years. Unke saath, we have published 7 games, and you might actually know some of these games as well. They're Style Garden, Super Salon. Please do let us know if you've played these games in the YouTube chat box, जो आपके right side पे आ रहा होगा. तो I want to hear from you guys कि आप में से कितनों ने ये game इसमें से कोई खेली हुई है, and what do you guys think about it? Yeah. And we have had 120+ million downloads, which is a lot. And the market that we target is also tier 1 countries, so US and Europe. So udhar aapki game ka tak successful hona is like a testament to the kind of hard work that we put in. Now about MLabs. So what is MLabs? MLabs ek initiative hai Mindstorm Studios ka, while we have been working in the industry for 2 decades at least, ye bhi realize hua कि the industry is not growing at the scale that it should. So MLabs was born with the initiative to catalyze game development in Pakistan and essentially make the pie bigger. So हम ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट अभी हो रही है पाकिस्तान में, हम उसको किक स्टार्ट करें, उसको एक्सेलरेट करें, and take it to a level where we can say that Pakistan is a global powerhouse for the gaming industry. And we do that in several ways. One is by investing into the future, right? So हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा investment होती है, not just monetary, but in terms of effort and energy and skills that we're putting out in not only training programs, exposure programs, but multiple other projects that we do to sort of bring this up to par
to global standards. Then we have channeling passion. How do we channel passion? So ek tarika hai to just earn money, do a job, find something you're good at and just, do that for the rest of your life. One way is that you find something that you like, something that you're passionate about, and then use that to make money. So that's what we want. हम ये चाहते हैं कि the people that come into our programs, they are able to explore their own passions. हम उनको pathways provide करें, उनको explore करें, and then see, and then channel that passion into very relevant streams where they can actually make money, make a living out of these passions as well, bringing forward fresh perspective. So जब भी आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं which needs you to be creative, you'll see that काफी दफा there's a lot of room for error and a lot of room to make mistakes. But if you go home and think, I failed today and I don't want to try again tomorrow, then you'll probably won't be capitalizing on that, one great idea that you do have. So our entire focus is iterate. So you go back, work on it again, and you keep working on it until you have something that you're proud of, something that you can put out and, show to the world. Number 4 is industry capacity building. Industry capacity building is also, we do realize that the industry is not currently up to par with where it needs to be. And to do that, हम काफी ज़्यादा इसमें भी investment कर रहे हैं कि हम industry की capacity build कर सकें to sort of meet the requirements जो globally हैं, जो regional हैं. And one of the ways that we do that is through incubation as well. So we're currently incubating 17 new indie studios. And we believe that through initiatives like incubation, we can actually build the industry as a whole and, give it like that much needed push forward to proceed. Uske alawa, we do have lots of programs, but I don't want to get into that right now. But agar main aapko thoda sa reach ka bhi andaza de sakun कि MLabs के जो programs हैं, they reach 144 cities across Pakistan. Most of the times when I share this number, people ask me कि पाकिस्तान में इतने शहर भी हैं, and I'm like, हैं, because we get kids from those cities, and across 137 universities we get people. So that is, that has been our success, and we want to take it further. So this is why we're here today. I will also be discussing our partners, Population Services International Pakistan. So Population Services, PSI is is a non-profit that is working in the healthcare sector. And through their multiple initiatives, they are working to increase access and access to healthcare and access to awareness regarding healthcare objectives. And they have worked on multiple projects related with governments, with international NGOs, और उनका हमेशा से यही focus रहा है कि हम healthcare को किस तरह improve कर सकते हैं. So, every Pakistani has access to the right kind of healthcare, and they're also aware of, how things work, क्या अगर, who to reach out to when things go bad. So, yep. Going forward, wanted to share the agenda. So पहला दिन है जो आप हमारे साथ होंगे, that is Saturday, 18th March. Mark your calendars, don't be late. So we expect all of you there at 9 a.m. sharp. We're going to have another orientation and kick it off. We'll do the team's assembly. हमने आपके लिए बहुत अच्छी सारा setup किया हुआ है. I hope you guys will come in and be excited to see. And then we will take you through a real-time role-playing game experience so you can get a better idea of what it's going to be like. फिर design rules आपके साथ थोड़े से discuss करेंगे. We'll have a very nice lunch, then some inspiration. You'll also get to interact with a lot of mentors that are coming in from the healthcare industry and the gaming industry, जो आपको बहुत अच्छी feedback दे सकेंगे, आपके साथ काम कर सकेंगे ताकि आपके idea को refine किया जाए. Moving forward, on 19th, which is Sunday, we'll resume again at 9 sharp. हम फिर play testing शुरू करेंगे. Play testing होगा ये कि जो आपने ideas develop किए हैं, you'll play them among yourself and to other people. So ये बड़ा scary part होता है अक्सर कि, आपने अपनी team में तो खेल लिया, now you have to open your game to other people's and you have to listen to their feedback. So that will be very interesting. And then another lunch.
फिर हम थोड़ी सी game demonstration और judging करेंगे because you know obviously it's a competition, and then the award distribution and closing ceremony. By the way, we have cash prizes for you guys. I'm not gonna announce the cash prize right now, but you will be happy to come in and spend your weekend for this. So if you're on the edge, make sure that you join us on Saturday. Okay. So Out of Thin Air hai kya? Out of Thin Air is one of the biggest game design competitions in Pakistan. It's like a no code, no tech competition. Jisme you will be creating an idea for a game and a playable game with everyday objects. So आप paper use करें, stationery use करें, pens, dice, whatever you want to use, but you can't use art created from, you know, technology, and you can't use code. So जो भी होगा, it will be your handmade, actually handmade. So today we have the orientation and theme announcement. I'll just, you know, announce the theme in the next slides. फिर हमारा कल idea submission है. A link will be shared with you, all of you on Discord. And उधर से आप अपना idea जिस पे आप काम करेंगे उसको submit कर सकते हैं. It's not very final. You can still, you know, tweak it, pivot from it, whatever you want. But ये कि आप idea submit करेंगे तो उससे हमें भी बेहतर idea हो जाएगा कि, you know, हम आपको किस तरह support कर सकते हैं. फिर 18 day 18 and March 18 and March 19 is on campus, in person, not campus but like in studio. So we'll see you there. Okay, so Discord में briefly चाह रही थी कि आप लोगों से discuss कर लूं. All of you have been added to the channel called Out of Thin Air Lahore 2023 if you provided your correct Discord address. But I believe at least one person from each channel has been added. So please do open Discord, the Mindstorm Studios server. And I will also share this guide with you at the end of the session, so you can also go over it and, you know, find the links from out here अगर आपके पास वो नहीं available. But ये कि अब सारी conversation जो है वो Discord पे होगी, तो please open the channel. उधर आपके कोई questions हैं, whatever you want to share, use that. And उसके आपके साथ भी आगे जो हमें requirement है time की, कोई material की, किसी और चीज की, तो हम आपके साथ वहीं share करेंगे. तो you might not be receiving emails from now on, so Discord is the way to go. Okay, theme. अब हमने डिस्कस करना है कि थीम क्या है. सो एक चीज हमने एक्सप्लोर की है, वो ये है कि गेम्स हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. हम अगर यूजुअली गेम्स को देखते हैं, वी सी कि, यू नो, गेम्स टाइम पास हैं, आप बोर हो रहे हो तो, यू नो, इट्स जस्ट समथिंग टू डू, समथिंग टू कीप योरसेल्फ बिजी. बट देयर इज अनदर वेरी अमेजिंग यूज फॉर गेम्स व्हिच इज सोशल इम्पैक्ट. कि लेटली गेम्स को यूज किया जा रहा है एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी के थ्रू कि हम थोड़े से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को एंगेज करें, ताकि हम टारगेट ऑडियंस को एजुकेट भी कर सकें, उनको अवेयरनेस दे सकें, एंड यू नो वी सॉर्ट ऑफ पुश देम टू पॉजिटिव चेंज और विदाउट बीइंग प्रीची. सो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि व्हेन यू मेक गेम्स यू दैट आर अराउंड सोशल इम्पैक्ट, तो जो टारगेट ऑडियंस है वो इंटरैक्ट भी करती है उन आइडियाज के साथ, उनकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, वो उन कॉन्सेप्ट्स को भी बेहतर समझते हैं, without it being like, you know, reading a very boring letter paper or a very boring documentary on, you know, why things happen. So this is why the theme for this time is family planning and reproductive health. I will tell you also a bit more about what we mean when we say this theme. So family planning and reproductive health are very closely connected concepts जो healthcare के different aspects को describe करते हैं. Family planning is about essentially planning a family, right? Okay, when does a specific part of your life need to happen in order for you to meet all the right goals, right? So that's how we see family planning. Whereas when you say reproductive health, उसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें include हो जाती हैं. You have sexual and reproductive well-being, safe and healthy pregnancy, childbirth, prevention and treatment of STIs, and infertility management. I think we have Aisha on call now. Aisha, are you there? Assalamualaikum. Yes, I am. I am on road, but I am here. Okay, do you want me to continue, or would you like to tell the participants a bit more about what the theme is, which is family planning and reproductive health? Because we would love to hear from you, since you've worked on these issues and, you know, would have very like pertinent insights into this issue. Sure. So I can go on.
if you can just very quickly tell me, who do we have? We have the participants already on this call. Yes, so all the participants are listening in. हम उनको अभी basically बता रहे हैं कि what to expect. हमने उनको बताया कि out of thin air है क्या, जो डिजाइन गेम जैम है. अब हम उनको बता रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट की गेम हमने क्यों सोचा है करने का, because like you know games have great power to bring change, and now we're telling them why family planning and reproductive health. So you know कि family planning है क्या, what does it include, why is it important, पाकिस्तान में क्या scene है, and then you know we can move on to the mechanics of the actual game building process. Bilkul, sure. So I think I'm going to share a little bit about what the country situation is. Yeah. I think everyone, all the participants over here are going to do a little bit of a research, and when you do a little bit more research, you will find out more that the population in Pakistan is, we are in a state of an emergency. We are in a state of crisis because हमारी आबादी जो है वो हमारे resources से बहुत 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 ज़्यादा है. And 2030 में it is estimated कि हमारे अगर हमारी इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो 2030 and then 2050 में हम almost हमारे सारे resources deplete कर जाएंगे और हमारे पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि हम इतने सारे लोगों को accommodate कर सकेंगे. So one of the things that PSI, Population Service International, which is the organization that I'm representing right now, is working on is trying to reduce the number of unplanned pregnancies that take place in Pakistan. Agar hum is, and obviously, that comes from a holistic approach. कि जितने ज़्यादा लोग होंगे और हमारे पास resources कम होंगे तो उतने कम लिटरेसी रेट होगा, हमारे उतने कम बच्चे स्कूलों में जा सकेंगे, बच्चे स्कूलों से कम पढ़ सकेंगे, उतने ज़्यादा हमारे कम लोग होंगे जो प्रॉपर मील्स अफोर्ड कर सकेंगे, खा सकेंगे, तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ जाएगा, हमारे पास वाटर सिक्योरिटी का भी इशू आ जाएगा, हमारे पास अर्बनाइजेशन का भी इशू आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, so that they are able to make a living for themselves. So it is going to be a very chaotic situation if something is not done about it. Over the last 30 years, PSI in Pakistan has been working in this space, but unfortunately, alongside many other organizations, and almost सारे बड़े donors जो हैं, USAID हो गया, UKAID हो गया, जितने भी बड़े donors हैं, वो काफी support करते हैं और invest करते हैं in the development sector ताकि हम इस issue को address कर सकें. But unfortunately, हमारी market जो है वो stagnant है. 30 साल से हमारे इंडिकेटर्स जो हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, वो एक स्टैग्नेंट स्टेट में हैं, यानी हम इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं. वेयर एज अगर हम अपने ही नेबरिंग मुल्कों को देखें, इफ यू लुक एट बांग्लादेश, इफ यू लुक एट ईरान, if you look at Indonesia, and I'm taking example of these countries in specific because इनका religious construct भी हमारा या हमसे थोड़ा मुश्किल ही है. इन सब ने बहुत अच्छा अपने इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है एंड अपनी पॉपुलेशन और sort of in a way पॉपुलेशन के डायनामिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ऊपर करने की कोशिश की है और they have been successful unlike Pakistan. One of the things that we feel at PSI Pakistan that we are lacking is कि हमने एक तो यूथ को engage नहीं किया है in this whole social and behavior change that is required in the country. हम हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में it is a taboo topic. We don't want to talk about it. Men don't want to talk about it. Women तो बिल्कुल दूर की बात हो जाती है. Married couples are not talking about this, and this is all coming from research and evidence. Married couple are very shy about talking about these things, contraception की use and all of that stuff के लिए काफी shy होते हैं. किसी को ये पता नहीं होता कि कहाँ से जा करके हम information लें. We did research, we spoke to a lot of men, and we found out that men said that इकोनॉमिक बर्डन आता है हम पे जब हमारे घर की फैमिली साइज बड़ी हो जाती है, बट हमें ये नहीं पता कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से जाके लें और किससे जाके लें. हम नॉर्मल सिचुएशंस में तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फादर्स के साथ या अपने भाइयों के साथ बात कर लेते हैं, बट अबाउट दिस टॉपिक वी कांट टॉक बिकॉज दिस इज अ टॉपिक अबाउट आवर वाइफ्स. सो दे लैक एन एजेंसी वेयर दे कैन सीक इन्फॉर्मेशन एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक. सिमिलरली फॉर वुमेन एज वेल. और इसी कॉन्स्ट्रक्ट को अगर आप रूरल कम्युनिटीज में ले जाएं तो ये और ज्यादा ग्रेव होता जाता है. यंगर पॉपुलेशन तो वी कांट इवन think of कि younger population is going to talk about these things. Absolutely. करते हैं, ये बातें होती हैं. It's not like these things don't happen,
राइट चैनल्स नहीं दिए जाते, एंड राइट चैनल्स जब नहीं होते तो इंफॉर्मेशन की सोर्स जो होती है वो एक credible source नहीं होती है. बिल्कुल So बिल्कुल. one of the things that PSI aims to do is engage young people, and by young people we mean whether it's married, unmarried, young adults, or newly married हो गए, या people who have 1 to 2 children. We want to engage them Yeah. into understanding the family planning dynamics in Pakistan. कॉन्ट्रसेप्टिव्स के बारे में वो आपस में बात कर सकते हैं, सोशल सेक्सुअल वेलनेस, सेक्सुअल जस्टिस, ये सारे जो डिफरेंट एंगल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकें, इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर सकें, और वी वांट टू नॉर्मलाइज द टॉक, बिकॉज द मोर द टॉपिक्स बिकम नॉर्मलाइज्ड एंड लोग जितनी बात करते हैं उतना ही सोशल बिहेवियर चेंज, एविडेंस बताता है कि उतना ही अच्छा सोशल बिहेवियर चेंज आता है. गेमिफिकेशन वी फील इज वन ऑफ द वेज through which, without being preachy, without really pushing the social construct जो हमारा एक बना हुआ है इसके अराउंड की ये टैबू टॉपिक है, एक बड़ा अच्छा तरीका है of passing on this information. I think you guys will be given the 3 different bifurcations of the topics that have been given. One is related to puberty or menstrual health and hygiene from women perspective, but puberty men में भी होती है तो उसको भी आप देख सकते हैं. In how do we engage men more into this conversation? और एक हमारा third था marital counseling, premarital counseling. We feel कि जब एक couple उसकी शादी होने लगती है, it is important कि वो लोग उनको इस family planning, contraception उसी तरह से उसके बारे में बताया जाए जैसे ये बताया जाता है कि घर आगे जाकर के तुमने अपनी बीवी से कैसे रहना है, या how are you going to live in your in-laws, लड़की को सिखाया जाता है. So we feel that premarital marital counseling अगर हो, it is going to be a very powerful tool for change. Absolutely. And just for you all to know that पाकिस्तान में तकरीबन सारे प्रोविंसेस में प्रीमैरिटल काउंसलिंग का बिल पास हो चुका है. सो ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है. अभी एग्जीक्यूशन करने का तरीका किसी ने नहीं सीखा कि करना कैसे है. केपी और पंजाब प्री मैरिटल काउंसलिंग के नाम से बिल को पास किया है. सिंध ने सिर्फ थोड़ी सी चेंज करके उसको मैरिटल काउंसलिंग कर दिया, बट ये हमारा लॉ अलाउ करता है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं आती. तो वी आर होपिंग थ्रू दिस वी आर एबल टू गेमिफाई दिस, और हम इसकी एक एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट को दिखा सकें कि this is how we can get information to younger people. So I'm going to take a pause. Happy to take questions if people have. I will be taking questions at the end. So we'll जो हमारा stream हो रहा है, live stream, the kids are going to be writing their questions there, and I will get them to you at the end. तो अगर किसी के कोई भी questions हैं about how this will work, but do wait till the end because अभी हम explain भी करेंगे. So जो next part है हमारी orientation का, which is sorry, Ramsha. So Aisha, if the entire thing will take like an hour. So if you want to answer the questions right away, you can. Depends entirely on you. I don't think we have any questions right now. Let me just check. Okay. अगर किसी के कोई questions हैं, please feel free to put them on the chat box, and I will put them to Aisha, and she can answer them for you guys. I think we can do one more thing. I do have another meeting I have to hop on to. No worries. So I can take questions right now. So okay. What we can do is you can gather the questions, and when you're queuing. Yeah. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you now. I think what we'll do is, I am gonna see. I don't think there are any questions, but if there are, I will collect them for you, and maybe we can, arrange for them to be answered at. Saying was I can take questions right now also, or what you can do is you can gather. Aisha, your voice is breaking up. We can't hear you. I think it's bad connectivity.
probably our end or your end. Yeah, so It's okay. Oh, I think she disconnected. Yeah. No worries, guys. आप लोग अपने just collect your questions and they will be answered when we have the in-person orientation on Saturday as well. Because Aisha will be there. She's going to fly in from Karachi. और जो भी आपके questions हैं concerning the topic, or if you want them to be answered early on, we can get them to her and we can get an answer for you. So don't worry about that. Just write them on the chat box. Okay, so अब ये है कि हमने काफी serious बात कर ली. अब ये कि अब हम ये करेंगे कैसे? How are we going to do this? So for mechanics, we have Mohsin, who is the program manager for M Labs, and he is going to explain what mechanics are and how are we going to employ them to make the game. So Mohsin, help us out here. Yeah, thank you, Ramsha, and thank you, Sophia. You know, you always light up the mood. Hi everybody, it's been a long day. काफी जान मार रहे इस event के पीछे, तो yeah, a bit the energy down है, लेकिन happy to be sort of happy to be giving you guys another event related to game development. Before we start, किसी को कोई सवाल हो, जिस तरह रमशा ने पहले कहा, जो हमने शुरू में थीम बताई है, किसी का भी कोई सवाल है, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिख सकता है और हम वो आहिस्ता आहिस्ता सब सवालों के जवाब दे देंगे. अभी तक मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में हेलो, हाय, सलाम दो और नो वॉइस ही आ रहा है, तो आई होप कि आवाज वो आ रही होगी और सब ठीक चल रहा होगा. सो आई हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इवेंट. रमशा ने आपको बता दिया है कि थीम, ओवरआर्चिंग थीम है, कि सिर्फ थीमेटिक थीम कहते हैं कि किस चीज को हम इसमें कवर कर रहे होंगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, बल्कि पाकिस्तान के लिए, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड वी डोंट हैव द रिसोर्सेज टू सॉर्ट ऑफ provide them with food or other basic facilities जो कि इंसान के पास होनी चाहिए. तो for that reason alone ये चीज बहुत important है. Ramsha, if you can kindly move the slide ऊपर नीचे और full screen कर दे, because if you can press F11 or something, मेरे ख्याल से full screen हो जाए. Yeah. So anyhow, तो हमने गेम बनानी कैसे है. अब इस तरह रमशा ने शुरू में कहा कि हमें कोई कोड तो है नहीं, कोई आर्ट्स भी नहीं है, तो फिर हमने करना क्या है, गेम कैसे बनाएंगे. सो दैट्स द एंटायर बिट. गेम बनाने के लिए आपको कोड आना जरूरी नहीं है, आपको आर्ट्स आना जरूरी नहीं है, आपको पता गेम को कंसेप्चुलाइज करना, गेम का एक एनवायरनमेंट बनाना, नॉट एनवायरनमेंट इन सॉफ्टवेयर, लेकिन एक जो एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया जो है उसकी बनानी है, उसके लिए जो रूल्स बनाने हैं उसके बड़े सिंपल से, अब वो बनाने आने चाहिए. वो रूल्स और वो पूरी पूरी दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आप वो गेम फिर से खेल सकें, खेलना चाहें, दूसरों के साथ भी खेलना चाहें, और उसमें एक रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट हो, और जितनी मर्जी वक्त तक खेलें आप बोर ना हो. इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है लूडो. लूडो एक गेम है, हम बचपन से खेल रहे, पता नहीं शायद हमारे माँ बाप ने बचपन में खेली हो. बड़ी सिंपल गेम है, 4 डिफरेंट बेसिस हैं और आपने उन बेसिस घर हैं, उन्होंने आपने निकल के अपनी बेसिस में जाना है, और दरमियान में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आपके आप किसी की गोटी को मार सकते हो, नहीं मार सकते, कहीं सेफ हो, कहीं अनसेफ हो. So that entire environment, that entire atmosphere that has been created through those rules is what makes Ludo Ludo. उसी आइडिया को लेते हुए हमने कहा था कि हमारे पास बड़े बच्चे आते थे, कहते थे हमें गेम बनानी है, कोड नहीं करना आता, गेम बनानी है, आर्ट्स नहीं करना आता. तो हमने कहा ना गेम बनाने के लिए कोड चाहिए ना आर्ट्स चाहिए, आपको बड़ा सिंपल एक एटमॉस्फेयर, एक इन्वायरमेंट बनाना आना चाहिए, एक दुनिया बनानी नहीं चाहिए और इसके अंदर रूल्स बनाने चाहिए. तो वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं. और जो हमारी फंक्शनल थीम है इस इवेंट की, उसका नाम हमने रखा है मैकेनिक्स मेनिया. अब मैकेनिक्स आप लोगों को पता है होते क्या है, अगर जो लोग ऑनलाइन है अगर वो जवाब दे सकेंगे व्हाट आर मैकेनिक्स, एंड आई विल टेक अ पॉज ओवर हियर सो दैट यू गाइस कैन लेट मी नो कि मैकेनिक्स क्या होता है. अहमद मलिक ट्यून इन हो गया, तो मतलब हमारी चैट जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी. और अहमद मलिक लाइक्स टू टाइप. No pressure, but a lot of pressure, Ahmed. अहमद मलिक ने पहली तो चीज लिखती है जिसमें सबको ताल्लुक नहीं है पूरी चीज से.
So yeah, again, किसी का जो भी जो बताना चाहिए मैकेनिक्स होते क्या है, they can easily come in chat box and type जो YouTube पे है. अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई ना कोई सुन रहा होगा. या जो बाइक रिपेयर करता है वो मैकेनिक जरूर होता है अली मुर्तजा. एंड हाउएवर इन दिस केस हम गेम मैकेनिक्स की बात करें तो या mechanic working of a system will sort of, yeah, mechanic means how we can play the game. Yes, that's pretty much close to being accurate. Mechanics are simple ways through which a player interacts with the game. When it comes to mobile games, it can be drag, swipe, slide, tap, कोई भी हो सकता है. जिस तरह मर्जी आप एक मोबाइल फोन से इंटरेक्ट करते हैं तो वो मैकेनिक है. इन द सेम वे अगर आप एक ऐसे फॉर्मेट में जाए जहां पे ना मोबाइल है, ना आर्ट्स है और ना ही कोई कोड है, तो जो गेम बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी. उसके अंदर मैकेनिक्स वो डिफर. हम बचपन से उन मैकेनिक्स को एक्सपीरियंस करते हैं. हाउएवर उनको हमने कभी उस नजरिए से ना देखा हो. सबसे बड़ा तो जो मैकेनिक है वो डाइस है जो लूडो में होता है. स्पिन इज अनदर मैकेनिक. कार्ड्स एक बहुत बड़ा मैकेनिक है. आप a deck of cards you can play like millions of games from a simple 52 card deck. बोर्ड्स एक मैकेनिक है. आप जितनी मर्जी गेम्स देखते हैं लूडो इंक्लूडेड, मोनोपोली है, कॉम्प्लिकेटेड गेम्स लाइक सीक्रेट हिटलर वगैरह, ये वो सांप सीढ़ी, चेस, कोई भी आप गेम ले लें उसके अंदर कोई ना कोई बोर्ड का एलिमेंट जरूर होगा. टाइल्स एक और बड़ा एलिमेंट है. अगर वैसे देखें मोनोपोली के अंदर भी कार्ड्स होते हैं, उनको भी आप एज टाइल्स कंसिडर कर सकते हैं. इस तरह के हजार और गेम इसमें टाइल्स का एलिमेंट जरूर होगा. और स्ट्रिंग्स का एलिमेंट उकुलेले में है. आगे 5-6 एग्जांपल्स हैं उसमें है. सो प्राइमरीली वो गेम्स जिसमें आप कोई फिजिकल या फिजिक्स का मैकेनिक इन्वॉल्व है उसके अंदर स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होंगी. तो ये पूरे 5-6 मैकेनिक्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेम बनाने के लिए. रमशे, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? Yes. So these are some of the examples जो कि implementation and mechanics. लूडो की मैंने बात कर ली. गुड क्वेश्चन. एक और गेम है which is a very interesting game. बेसिकली ये गेम इन्वॉल्व करती है एलेक्सा. अगर आपको पता हो, जो अमेजोन की डिवाइस है, और आपको एक डेक ऑफ कार्ड्स दिए जाते हैं. आप वो डेक ऑफ कार्ड्स लें, उस पर एक लफ्ज आएगा कि कोई भी सिनेरियो आ जाए, वो लफ्ज आ जाएगा. फॉर इंस्टेंस कि आपने एलेक्सा से कहना है कि वो किसी ना किसी तरह it needs to say the word boy or girl or whatever, right, without actually sort of saying that word from your mouth, right? So how would you sort of describe it to Alexa? तो वो जो भी आप अपने उसको रूल्स वगैरह बताएंगे या फिर कोई बातचीत बताएंगे, तो एलेक्सा ने जवाब में बॉय कहना है, गर्ल कहना है, किताब कहना है, लाइटर कहना है, या फिर लैपटॉप कहना है, व्हाटएवर द वर्ड मे बी, लेकिन आपने वो नहीं कहना. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम लाई हुई जिसके अंदर एलेक्सा के थ्रू, विच इज सिंपली एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय अमेजोन, आपने उससे एक सवाल का जवाब देना है विदाउट लेटिंग इट नो कि वो जो वर्ड उसने कहना है वो क्या है. तो उन्होंने पूरी गेम इसके अराउंड डिजाइन कर दी. इसके अंदर बहुत रिसर्च की उन्होंने की कौन से लफ्ज हैं जो एलेक्सा आराम से कह देती है, कौन से लफ्ज है जो एलेक्सा एलेक्सा की डिवाइस मुश्किलों से कहती है, कुछ लफ्ज हैं जो एलेक्सा की डिवाइस कहती ही नहीं. तो उन्होंने पूरी बैकग्राउंड में पूरी रिसर्च की एंड दे मेड द गेम एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट सिस्टम रखा और इस गेम को एक फ्रेमवर्क में डाल दिया जो कि पूरी चीज को गेमिफाई कर दी. उन्हों की बात है, वो एक कार्ड बेस्ड गेम है. अगेन वो 52 डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते, उन्होंने अपने रूल्स बना दिए. तो आप इस तरह की भी कोई गेम बना सकते हैं. इसके अंदर आप कार्ड बेस्ड मैकेनिक डाल सकें. जो मैंने पहले बात की कार्ड्स की, अपनी 52 जो कार्ड्स के डेक है उनकी अपनी बुकत है. हजारों गेम उससे बन सकती हैं. अगर आप बचपन में डकैती वगैरह खेलते हो या फिर आपको मेरी तरह रंग खेलने का शौक हो, तो यू अंडरस्टैंड कि किस तरह यू कैन जस्ट टेक 52 डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड मेक मल्टीपल गेम्स फ्रॉम देम. ट्विस्टर एक और गेम है जो कि फिर टाइल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है. अगर आप लोगों में से किसी ट्विस्टर खेली हो,
बेसिकली आपको एक साइड पे रोटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया होता है, सब घुमाते हैं और फिर आपने अपना हाथ या हाथ पाँव एक स्पेसिफिक कलर पे जाके रखना होता है, एंड दैट टेक टर्न्स, और फिर दो लोग अजीब से ट्रायंगल हो जाते हैं, एंड यू टू सॉर्ट ऑफ गो फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि whichever color and whichever position comes in, आप उस पर जा सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी मैकेनिक्स की, इसकी बहुत मशहूर गेम्स पहले ही एग्जिस्ट करती हैं। रमशा, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? इसी जब हम ये अक्सर अभी स्लाइड शेयर करेंगे तो इसके अंदर काफी यूट्यूब लिंक्स वगैरह दिए गए जहाँ पे आप जाके कुछ एग्जांपल्स जो कि देख सकते हो। अब डाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि हम हमेशा से एक 6 फेस डाइस ही देखते आए हैं। Yes, sorry about that. I don't know what happened. Anyhow, तो अब आप जो डाइस है वो एक 6 फेस डाइस ही हमेशा देखते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी गेम बना सकते हैं जिसके अंदर आप 8 या 9 फेस का डाइस बना, दैट वुड ऐड वैल्यू टू योर एंटायर गेम प्ले। अब आप उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं उस एनवायरनमेंट में, वो आपके अगेन स्पिन का मैकेनिक लट्टू आप बचपन से देखते हैं, उसके अंदर स्पिन का मैकेनिक लगा है। हाउएवर आप और भी किसी भी तरह से ये अपनी गेम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बोर्ड का मैकेनिक भी आप जिस तरह मर्जी चाहे कर सकते हैं। आप चाहें तो आप डोटा के मैकेनिक्स या डोटा का गेम प्ले एक स्ट्रैटेजी गेम के थ्रू एक स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क बनाएं और वो बोर्ड मैकेनिक के ऊपर लगा दें। सो द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, में जो बनाना है आप कर सकते हैं। So these are some of the examples that have been shown over here to sort of give you an idea of what games you can make. Now I think Sophia Yes. would step in and sort of provide you with an ideation framework, और किस तरह हमने एक जो हमारी ओवरऑल थीमेटिक थीम है उसको लेके एक हमने आइडिएशन का फ्रेमवर्क रखा है। So Sophia, over to you. Thank you so much, Mohsen and Ramsha, for such a detailed introduction. It also helped me kind of think about this a bit more. So we had a little bit of time and we were thinking about, what are the kind of games that you can come up with. Obviously, जब हम ये आपको पूरा बताएंगे, we don't, ideally want कि आप यही game incorporate करो, but you can incorporate aspects of it. You can, kind of follow through the methodology. You can use the framework के ये आपने steps देखने, and इस step से आपका creative process आपको जहाँ पे भी लेके जाता है, like, you'll have mentors, you'll have people there to help with those ideas. So this is just like a framework to get to a point where, you can just do a basic check कि अच्छा हाँ मैंने ये भी कर लिया, मैं ये भी कर लिया, मैं ये भी कर लिया, so roundabout I'm on the right direction. So सबसे पहले ये जो गेम है ये है प्लान योर फैम। सबसे पहले मैंने इसका नाम फैमिली प्लानर रखा था, बट मोहसिन ने कहा था ये बहुत लेम है, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है इसको थोड़ा मैं फन कर दूं। सो गाइज, so that's the biggest rule of the game is that you have to empathize with your audience. So I had to figure out, make a name more fun. You need to figure out how to make this topic, which is like a very big sensitive topic, more palatable, more easy for people to understand, relate with, empathize, and just understand कि अच्छा इस person की journey क्या है, या how कि उनको उस points के बारे में आप उनके you're not really telling them or you're not really preaching to them, but in a way they are absorbing all of this information. I'll give you another example later on, but I'll start with this now. So sabse pehle, plan your fam. So the topic is family planning. So the first thing is a Google search, basic. I mean, all of you at university, school में तो बहुत होता था कि टीचर कहती थी जो बताया वही करना है. So अब वो नहीं करना, please search कर लेना, Google पे जाना, लिखना, family planning. एक source ना पढ़ना, ठीक है, कुछ 10-15 sources तो देखना, images देख लेना, मतलब वैसी आर्टिकल्स ब्लॉग्स पढ़ लेना, पाकिस्तान पढ़ लेना, फैमिली प्लानिंग पाकिस्तान, एंड देन वंस यू हैव लाइक अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा बहुत जिस्ट पता चल गया है क्या लोग बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े क्या चीजें हैं जो आप सोचते हो that like come forth, and ये वाली चीजें हैं that are most integral, then you move on to the next step. Okay, you cannot skip these steps. Please Google search कर लेना, लोगों से बातें कर लेना, like just make sure कि you have a base knowledge so that you can then understand कि आगे कैसे बढ़ना है. Then things we see.
So when we when we think about this topic, what are the things that you are seeing, what are the things you see in that Google search? आप क्या मतलब, what are the things that you think about when you think about family planning? Finances आते हैं, obviously planning, anything to do with planning is usually related to finances. It's to do with building a family, it's to do with like professional life पे क्या consequences होते हैं, career growth पे क्या consequences होते हैं, health पे क्या consequences होते हैं, because अगर आप एक family हो, आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मतलब आई होप इससे ज्यादा ही हो, बट ये कि आप एक फैमिली हो, आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो आपने उस बजट के साथ कहाँ कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो अगर आप हेल्थ में कोई बीमार है, आप उसकी तरफ डाल दोगे, तो फिर आप आप बच्चे के एजुकेशन की तरफ नहीं डाल सकते. सो दीज आर ऑल द कनंड्रम्स दैट यू हैव एंड दीज आर द थिंग्स दैट कम अप. हेल्थ, वेल बीइंग, चिल्ड्रन, कम्युनिटी, फैमिली सपोर्ट के बगैर बड़ा मुश्किल होता है. लाइक ऑल ऑफ आर वी कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हु लिव इन द यूएस, दैट उनके क्या डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, लोकली क्या डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. सो everything that will come up, these are the topics that will probably come up, and you can expand on. This is just a baseline. We would like for you to go back and give us 100 more things, but this is to get those like brain juices going. Next, game. सो आपके पास अब ये सारा टॉपिक्स आ गए हैं, आपको पता है कि अच्छा ठीक है, ये है, फलाना है, ढमकाना है, सब कुछ है. आप कह रहे हो कि इससे गेम क्या बन सकती है. जरूरी नहीं है कि आप जो भी चीज निकालो उस सब चीज की गेम बन सकती है, क्योंकि सम ऑफ इट माइट नॉट बी रियली दैट इंटरेस्टिंग. आप अगर हमने ये प्लान योर फैम बनाया, तो इसमें हमारे पास स्ट्रैटेजी गेम है. हम देखना चाह रहे हैं कि एक फैमिली है, उसमें लिमिटेड बजट है, उसके अंदर वो बजट को किस तरह स्क्राइब करते हैं, किस तरह यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट चीजों में. तो आपने उसी तरह देखना है कि हमने अगर माई रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी गेम है, आपकी किस तरह की गेम होगी, आपकी कंस्ट्रेंट्स क्या होगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ गेम, and Mohsen, I'd like you to jump in if I'm missing something, is that you have to get from one point to the next. And in getting from one, it's like life, right? You have to get from one point to the next, but in getting from one point to the next point, there needs to be some obstacles, there need to be some challenges. If it's a multiplayer game, you have to have another person trying to मतलब आपके कोई resources लेके जाना चाह रहा है. So there's some kind of like a definitive end that you're reaching. The end is that you're able to plan your family in this case, right? You're able to utilize all of the different avenues that you have to collect assets and to deploy assets to make the best decisions. ओके, सो द नेक्स्ट इज कि आपके गेम के अंदर आपने रिसर्च करने कि आपके मैकेनिक्स क्या होंगे, आपके लाइक आप चीजें क्या यूज करोगे. यहाँ पे जिस तरह एक बोर्ड गेम है, राइट, सो यू आर लाइक मैपिंग अ जर्नी. आप उसमें कह सकते हो कि लाइक आई एम गोइंग टू यूज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, और एम आई गोइंग टू, हमारे यहाँ पे क्या बोर्ड है, आप डाइस रोल करते हो, डाइस के बेसिस पे आप आगे जाते हो, या डाइस के एंड देन डाइस के बेसिस पे आप अगला कार्ड भी ड्रॉ करते हो, और कार्ड्स आपको ऑब्स्टिकल्स देते हैं. So you have to have a real clear idea about how you're moving through this journey and what are the kind of mechanics you're using. जिस तरह मोहसिन ने बताया कि फर्क चीजें आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग हो सकती है. So I mean, this is where your creativity really comes in, right? Because you are just showing कि अच्छा हमने ये utilize किया है, हम इस point से इस point तक जाना चाह रहे हैं. फाइनली आप पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, एंड देन आप आइडिएट कर रहे हो. आप कह रहे हो कि अच्छा आप बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हो कि अच्छा हमारे इतने लोग हैं जो गेम खेलेंगे, मल्टीप्लेयर है, ये हमारा ये गेम का थीम है, हमारे गेम में ये मूवमेंट होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और या ये कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बी टू सी है. ए टू बी के लिए उसके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसके पास डाइस है रोल करने के लिए, और फिर ये कि आप बात करोगे कि हमारा आर्ट जो है, एस्थेटिक्स हमारी गेम इस तरह की होगी कि वी वांट के जो हमारी डाइस है वो एस्थेटिकली ऐसी लग रही हो, हमारा जो बोर्ड है वो किस तरह लेड आउट है, और उसके अलावा ये कि आप देख रहे हो कि आप आपका ओवरऑल जर्नी क्या है. सो Mohsin, please jump in if I've missed any. I think I would also like to just maybe explain the idea for the game. Okay, for example, plan your fam. You're playing it with like 3 of your friends, and the goal is to plan a family, right?
एंड उसमें आपके मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं. एक गोल है दैट यू हैव टू हैव अ बेबी at the right time, and you will decide what that time is. And then you also have to progress in your career, so maybe you are targeting 2 promotions that you need to get within the next 10 years, and the board is your life, right? And then one task could be you also have to complete your degree. So आपने कोई और masters या PhD or another course that you've taken up, and you also need to complete that. So आपको एक लेफ्ट पे एग्जांपल भी नजर आ रही है बोर्ड की कि ये बोर्ड है. So it could be कि जो green है, that is only when you can have a baby on the green one. So you also sort of need to strategize how you'll get there, and by the time you get to that point, you have to do some previous planning as well. For example, you need to make an insurance account or take out an insurance policy in the name of the baby, so you can better provide for them. तो इस तरह करके होगा कि आप उसमें मल्टीपल चीजें डालें. अगर आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा और कम्प्लेक्स करें, वन थिंग यू कैन डू इज के आप दूसरों की प्लानिंग सैबोटेज कर सकते हैं. तो हो सकता है किसी ने किसी स्टेज पे कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है किसी घर के लिए या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, बट यू ब्राइब एन ऑफिशियल and you're able to sort of affect their plan, and that's how you also make a strategy and affect other players while also focusing on your own. और ये है कि इसमें restriction ये है कि you start with the set amount of money, and in the end आपने वो जो 3-4 milestones हैं वो पूरे भी करने हैं. आपने बाकियों का भी देखना है कि आप सबसे पहले भी वहां पहुंचे हैं, आपने सही टाइम पे भी करना है. सो इस तरह की complexity उसमें डाली जा सकती है, where the game is also informational, that it's providing you information on how things work, healthcare को किस तरह बीच में incorporate करना है. So that's the game, that's plan your fam, right? Yeah, I think that's all from my end, but yeah, Sophia, we can also do the next game. मोहसिन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? I think you explained everything in a brilliant way, and then Ramsha ki jo input thi wo bahut valid thi. So guys, don't get stuck by the name. Plan your fam. This tarah Sophia or Ramsha ne kaha, you can take it in any way possible. This can completely be like a financial game, right? This can completely be like कि आपने अपना profession किस तरह plan करना है. Or this can completely be like literally as the name says, you plan your family accordingly as per a certain set of circumstances. So the world that you need to create depends entirely on you. हमारा काम यहाँ पे ये है कि आप जो भी वर्ल्ड क्रिएट करें उसमें जो आप रूल्स वगैरह बना रहे हैं और जो पूरे फ्रेमवर्क बना रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो खेलने के लिए, वो रिलेटेबल हो और उससे आपको कुछ सीखने को मिले. So that's the entire point. और ये जो फ्रेमवर्क है, you can just use it for any idea. और जिस तरह आपको सोफिया और रमशा भी आगे जाके एक और भी यही फ्रेमवर्क एक और आइडिया में भी इम्प्लीमेंट किया विद काइंड. So yeah, that's the entire gist. So the next game, the town hall or the manager. इसमें ये कि जहाँ पे पहले आप role play कर रहे हैं and you are doing this is kind of like doing the same thing at a larger scale. So I'm sure सबने यहाँ पे क्या game है, Sims है जिसमें कि आप family बना रहे होते हो और पता नहीं आपकी कोई society होती है and blah 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 blah. So हमने थोड़ा सा वहाँ से inspiration लिए और हमने ये कहा कि ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, Google search. I know I keep saying Google search because it is such an integral point. और मतलब अगर हम Google search के लिए लहदा से एक पॉइंट दे सके ना टीम को, I don't know, तो हमें देना चाहिए because इतना जरूरी होता है. And it's so important for you guys to go through that process, of learning. Like आप creativity in a vacuum नहीं अपनी exercise कर सकते अगर आपको कुछ नहीं पता. आपको कुछ पता होगा तो फिर आपकी creative brain चलना शुरू करेगा. अगर आपके पास बस खाली मतलब creative हो तो ऐसा कुछ नहीं होता. So please Google search, spend this time before this starts to really get as much information. Talk to people around you and think about it yourself. Like try to empathize कि हाँ ये मैं चीजें जब मैं बाहर जाता हूँ या बाहर जाती हूँ तो मैं किस तरह इन चीजों से associate करती हूँ, relate करती हूँ या करता हूँ, and how do I make sense of this, right? Because a lot of the consumers might be people your age, might be people who are also aware of the same things in Pakistan, engaging with the same situations. So that level of relatability for them will have so much value, right? So as local as you can make the content, as relatable as possible, that would be like supreme.
सो सबसे पहले गूगल सर्च, मतलब आपने देखना है कि टाउन हॉल, आप देख रहे हो कि सिटीज किस तरह ऑर्गेनाइज हो रही है। बेसिकली आप कह रहे हो कि सिटीज में अगर आप अभी तो बहुत एक्सटेंसिव होती है सिटीज, पर जिस तरह आयशा ने कहा था कि आपके पास एक लिमिटेड बजट है और आपने हेल्थ केयर में भी डालना है बजट, आपने इंश्योरेंस में भी डालना है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर हो, आपने और इसमें ये कि अगर आप दो लोग हैं, और अगर हमारी जो गेम थी कि दो लोग हैं एंड दोनों की अपनी सिटीज हैं और अपने मतलब मरकज है, तहसील है, whatever, and they have to manage that area, right, or that locality. So they have to see कि अच्छा ठीक है इतने लोग हैं, इसमें हमारे पास इतना एक लिमिटेड बजट है, ठीक है। अब लिमिटेड बजट में मैंने उसमें हेल्थ केयर में भी बजट डालना है, मैंने मतलब एजुकेशन में भी डालना है कि बच्चे स्कूल चलते जाएं, मैंने इंश्योरेंस के लिए भी मतलब मैंने देखना है कि वो लोग इंश्योरेंस अगर डाल रहे हैं तो इतने लोग इंश्योरेंस डालेंगे तो पब्लिक increase होगा। बल्कि I would also encourage you can read up on insurance ना, कि how it works. एंड देन ऑल्सो कि मतलब पॉपुलेशन मैनेजमेंट। सो अब लाइक इशू क्या होगा, अब मत खुद सोचो, अगर मतलब गवर्नमेंट के पास या आप हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर, आप पास लाइक इतने पैसे हैं, एंड देन एकदम से क्या होता है कि मतलब आपने सोचा है कि हर साल 30 बच्चे आएंगे स्कूल, और वो 30 की जगह अगले साल लाइक 60 आ रहे हैं, 60 की जगह 80 आ रहे हैं, तो इट्स लाइक एन अनकंट्रोलेबल थिंग दैट यू आर गोइंग टू एंड अप विद नो मनी एंड द अदर पर्सन विल विन, राइट। सो द गेम इज मतलब सबसे पहले तो आपने देखा हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ द गेम, जो मतलब हु आर यू मेकिंग दिस गेम फॉर। हमारे लिए इट वाज वी वर मेकिंग दिस गेम फॉर पीपल हु कैन who understand social issues, who are of the same age, who are also kind of competitive, so they also have that edge कि अच्छा we're playing against someone, there's a level of background information required, and it is like a casual game, right? So मतलब जब casual है mid it's a difficult game and you have to increase your knowledge and understand how the city works, and then then you're talking about कि अच्छा आपके पास आपके मैकेनिक्स क्या है इसमें। हमारे इसमें मैकेनिक्स वही थे जो थोड़ा सा मैंने बताया था कि हमारे पास एक बोर्ड है, हमारे पास रेजिडेंट्स हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास एक इंश्योरेंस का इंस्टीट्यूशन है, एक हमारे पास हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, एक हमारे पास स्कूल्स हैं, और एक हमारे पास लाइक हॉस्पिटल्स और फैमिलीज को हमने अभी इंटीग्रेट किया हुआ था। सो इट वाज अबाउट व्हाट इंटरवेंशंस डू यू टेक प्लेस एट द hospitals that will affect the school, that will in addition affect इंश्योरेंस, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी ज्यादा, हमने इसमें एक अजम्पशन थी कि जितने लोग पढ़ेंगे उतनी ज्यादा अच्छी जॉब्स आएंगी, जितनी अच्छी जॉब्स आएंगी उतनी आपका इंश्योरेंस इंक्रीज होगा, आपके पास अवेलेबल जितना आपके पास इंश्योरेंस इंक्रीज होगा उतना आपके पास कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और पैसे आते जाएंगे। सो ये हमारा एक लूप था कि आपके या तो आपके डिप्रिशिएट हो रहे हैं पैसे या इंक्रीज हो रहे हैं। द गोल इज कि बाय द एंड ऑफ द ईयर like हम इसमें तो ऑब्वियसली वो जो टीवी टाइम नहीं होता कि वो एकदम से ईयर खत्म हो गया वाओ तो वही होगा कि मतलब बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने पैसे बचे हैं और आपने कितना ज्यादा अपने माशरे को तरक्की की तरफ लेके गए हैं। Yes, so please guys, इसके थ्रू हम ये सिखाना चाह रहे हैं विदाउट टीचिंग पीपल के माशरे की तरक्की सबके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अहम है। सो सब सोफिया के लिए तालियां करें कमेंट्स में, जरूरत है। सोफिया इज लिटरली इस तरह का जिस तरह बस पॉलिटिकल लीडर ना की स्पीच दे रही है तुम लोग सबको जगा रही हो। गेम में तो मैं टाउन एडमिनिस्ट्रेटर ही हूँ ना, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर का मैं फुल एम्बॉडी करी थी पर्सनालिटी। सो एनीहाउ उसके बाद आइडिएट एंड रिफाइन कि आपके पास ये आइडिया आ गया, आपको पता आपकी ऑडियंस क्या है, आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये चीजें हैं जब मेरे इश्यूज हैं। ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करना होगा बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट इश्यूज लाइक देयर आर सो मेनी इश्यूज, राइट? सो यू हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, सो यू कांट गो टू एवरी सिंगल, so you have to like streamline it, you have to focus on a few issues, you then आप एक बनाते हो कि अच्छा ये हमारा गेम है, हमारी ये लेवल्स हैं, हमारा ये प्लान है और ये हम आर्ट इस तरह एस्थेटिकली डिजाइन करना चाह रहे हैं कि कि हम थोड़ा लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाए, लोकल मतलब स्कूल्स पता नहीं किस तरह होते हैं, मतलब सो मतलब पाकिस्तान के मैप के ऊपर बनाए। So anything that you think is interesting, talk to us about it, and you have these mentors who are going to tell you कि हाँ यार ये तुम्हारा फिट आइडिया, ये मैंने सोचा ही नहीं था, that would be just amazing for us, कि मतलब ये तो हमने
हमने सोचा ही नहीं था कि हम कहें कि यार हमने जो आइडियाज दिए थे इतने फारिग थे, इनके तो इतने बेहतर है, यू नो, सो दैट वुड बी अ ड्रीम. सो उसके अलावा ये कि फिर आपका यू नो आर्ट स्टाइल क्या है, एंड देन यू नो इट्स अबाउट आइडिया. So please research as much as you want and you can, and then come up with amazing ideas, because you know I'm looking forward to it. Mohsin, please add anything that I've missed out. No, I think you bang on the money. You covered everything. I guess there's nothing else to add to this idea other than that. You, the entire premise of having this theme, और मैं एक दो comments पढ़ रहा था. I'm sure थोड़ी confusion अभी भी किसी न किसी के ज़हन में होगी. आप लोग कोई बोल नहीं रहा अभी तक. It's about using this concept and gamifying it, not मतलब कि वो नहीं in the true essence of the word. जो हमने दोनों examples दिए हैं, जो just take outputs or outcomes of the two topics, the two thematic themes हमने दी हैं, और उनके ऊपर गेम बनी हुई है. तो उसका जो इफेक्ट होगा उसके ऊपर लोगों ने गेम बनाई है, so that ना सिर्फ उस गेम को आपको खेल के मजा आए, बल्कि आपको कुछ सीखने को मिले, और जो नॉलेज डिसेमिनेट हो रही है वो बेहतर तरीके से हो. जिस तरह अगेन अब ये पूरे टाउन हॉल की मैनेजमेंट के ऊपर, कि पूरा जिला या फिर एक छोटी काउंटी किस तरह मैनेज करते हैं और उस पर क्या इफेक्ट्स आएंगे अगर विनो पॉपुलेशन ऊपर जाए या फिर नीचे आए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सब कवर होता है. इट्स बेसिकली an administration game rather than like a very hardcore population control game. So yeah, that's about it. Again, Sophia, well done. You know, yeah, one thing I just wanted to add, because you said कि you know हम I don't know किसी और को याद है, but मेरे बचपन में गेम खेलती थी. है, मेरा तो बचपन बहुत पुराना था, but I used to play a game called Travel the World. उसमें मुझे हमने क्या करना होता था कि हर कंट्री का अपना मैच करना होता था उसका कैपिटल ऑफ. एंड माय पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि हमें ना, मेरे दोस्त, हम सब सारे कंट्रीज के कैपिटल्स आते थे. वो कहते थे हम गलती से भी इनको बताना नहीं चाहते कि ये कोई एजुकेशनल या लर्निंग इनकी हो रही है, बिकॉज जिस सेकंड ने पता चलेगा ना कि पढ़ रहे हैं तो इन्हें खेलना छोड़ देना है. सो इट्स सच अ फैक्टर, राइट, इज दैट द सेकंड वी आर अवेयर एंड द सेकंड वी नो कि आप कोई यू नो लर्निंग एनवायरनमेंट में हो तो आपका दिमाग बंद हो जाता है. सो गेमिफिकेशन इज सच अ वे टू लाइक यू नो increase that curiosity. So yeah, ये तो बहुत, yeah, I'm sure काफी लोग जो मैथ गेम्स खेल रहे होते हैं, जब उन्हें क्लास में कोई कहे ना मैथ गेम खेले तो एकदम से देर लाइक क्या है, क्या बकवास. लेकिन सोफिया आपका बचपन तो भी चल रहा है. I mean that I mean I'm pretty sure you still play that game. एमी आप ऑडियंस के सामने ये ना जरा हम्बल ना बने हो, मैं बहुत मेरी एज बहुत ज्यादा है. That's not the case. तो इस वजह से सोफिया still plays that game, guys. Just letting you all know. Thank you, Sophia, for your wonderful insights into game design. You know, well done. I'm thoroughly impressed. Anyhow, moving on. लंबी हो रही है बात, हमने खत्म भी करना है. So we just have like very little time. But ये कि हमारा थोड़ा सा और चीज है जो आप लोगों से डिस्कस करनी है. So like कुछ deliverables होंगे गेम के, आपके साथ आएंगे, आपसे तब भी डिस्कस करेंगे. So we have a document जो आपने साथ फिल करना होगा. उसके लिए जरूरी है कि एक टीम के पास एक लैपटॉप जरूर हो. So please bring your laptop along. I can't stress it enough. Please bring your laptop. ठीक है. फिर आपने दो चीजें लानी है. You need to bring your CNIC as well. And I would just like to reiterate that this competition is only for 18 and above. So make sure you are 18. If you're not, just reach out to me. I'm sure you have my email or my Discord, and we'll see कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है. So game design document होगा जो अपने लैपटॉप पे फिल करेंगे. फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको होगा, उसको मटेरियल आपको मिल जाएगा. फिर आपने पिच भी करना है. तो जब आप जजेस के सामने जाएंगे तो you'll get to pitch, right? Don't see है कि इंस्पिरेशन अच्छी चीज है, but please don't copy games. Don't copy Ludo or Monopoly or some other game because हमें पता चल जाएगा. So don't try and do that. And then you can't bring computer generated art. If you want to make art, you have to make it there, like with color pencils or paper, like markers, whatever you want to use, but it has to be handmade. ठीक हो गया. Then like the scoring criteria, कि scoring होगी किस तरह. वो ये कि idea जो है आपका हाउ क्रिएटिव इट इज, एंड आपने थीम को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया है, मैकेनिक्स को भी, और जो हमारी फैमिली प्लानिंग थीम है वो कितनी ज्यादा इनकॉर्पोरेटेड है, एंड हाउ वेल इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड दैट वी वांट टू शो. फिर एक्सटेंडेबिलिटी, हाउ वेल डज द गेम होल्ड, कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, कितनी देर चलती है,
कितनी complexity आती है उसके अंदर। फिर है playability। प्लेबिलिटी क्या है? प्लेबिलिटी में आ जाता है कि क्या उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी हैं, या बस एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी गेम है, यू रोल अ डाइस, यू गेट टू द एंड एंड यू विन द गेम, राइट? बिल्कुल ऐसी भी बात हो, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज, ऑफ चांस, ऑफ लक कुछ तो हो जिससे गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फन फैक्टर। क्योंकि मेन चीज यही है कि आप टारगेट ऑडियंस आपको पता है 18 to 30 ही है, यू आर द टारगेट ऑडियंस, सो यू शुड मेक एन अमेजिंग गेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इज इट फन टू प्ले? सो इट्स नॉट अ बोरिंग गेम, इट्स नॉट अ प्रीची गेम, but it's super 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 fun to play. So that's all from our end. I am just going to head over to the chat box, so if you have any questions, please write them there. We're all going to be here. I will also ask Mohsin to answer any questions. So yeah, questions बताएं आप लोग अपने अब। So I just read a thing, मैं भी खोला था तो एक सवाल आया हुआ था कि हम क्या क्या साथ देंगे। So each team will be provided with a stationery box, जिसके अंदर फर्क फर्क चीजें होंगी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो to sort of design whatever you are making, right? उसके साथ साथ आपको चार्ट पेपर्स होंगे, आपको इस तरह की स्टेशनरी और जो फर्क फर्क कलर्स के होंगे। तो बेसिक स्टेशनरी सबके पास होगी, जिस तरह भी यूटिलाइज करनी है वो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि आप सब चीज यूटिलाइज करो, जो दिमाग में आता है आप यूटिलाइज कर सकते हो और जिस तरह भी उसको यूटिलाइज करना है, दैट्स एंटायरली अप टू यू, बट यस बेसिक स्टेशनरी वुड बी ओवर देयर। Wow guys, you really don't have any questions for us this time. This is crazy. वरना हमेशा ये होता है, इतने सवाल होते हैं, आधे साथ साथ आंसर हो रहे होते हैं, आधे होता है कि यार टाइम खत्म हो गया है। खैर प्लीज पूछें। मे बी इट्स लाहौर, हमने शुरू में कराची में किया, कराची वाले तो फौरन मोहसिन, से you did सवाल पे not. सवाल पे सवाल। You मुझे did लग ये रहा not. है कि ये कोई इट्स समथिंग, मुझे तो कुछ हो रहा है कि यार मैं भी लाहौरी हूँ, ये क्या सीन हो रहा है, कराची वाले आगे मोहसिन, ये निकल रहे हैं। आपने बड़ी गलत बात कर दी है, तो सिटी वॉर शुरू हो जाएगी। बट हाँ, आई गेस मे बी That's पीपल true. हैव मोर क्वेश्चंस इन कराची। Yeah, I mean, maybe they like the event more. Guys, no questions with regards to the team. सब लोग इस तरह चुप क्यों हो गए हो? I mean, what's going on? I mean, क्या चल रहा है? शबान ने 2 दफा पूछा, इवन और रमशा आपने बता दिया है, बट प्लीज इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होंगे? हाँ, वो बेसिकली पहले पूछ के उसने फिर पूछा। उसने कहा है कि मैं फिर से पूछ लूं। आई लव इट। हमें ये चाहिए, हमें एक दफा और पूछ लो। अभी आई थिंक आपका ही मैसेज आया। अच्छा नहीं, एक और क्वेश्चन आए। थैंक यू तलहा, टाइम लिमिट एंड रिसोर्सेज। मोहसिन भाई, अच्छा चलो मोहसिन रिजेक्शन। तो मोहसिन भाई ने बताना कि रमशा बाजी ने भाई ने बताना। I don't बताना। know. Anybody मोहसिन can. भाई ने। Anybody can. Okay. मोहसिन So भाई से टाइम लिमिट आपके पास, फ्राइडे सैटरडे को ये इवेंट शुरू होगा 9 बजे और खत्म होगा 7 बजे, जिसके अंदर फूड्स ऑन द हाउस, टीज ऑन द हाउस, वी हैव लॉट ऑफ स्नैक्स फॉर यू गाइस ऑन द हाउस। और हमने पूरा दिन डिवाइड किया हुआ, जिस तरह रमशा ने आपको दिखाया भी था ओरिएंटेशन के जो अपने स्लाइड्स के अंदर। और फिर दूसरा दिन भी आपके पास सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। हाउएवर दूसरे दिन में कोई 4 बजे के करीब आई थिंक रमशा जजिंग स्टार्ट्स और समथिंग, और आपको एक 5 मिनट की जाके जो आपने गेम बनाई होगी वो फिजिकली जाके डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी जजेस के सामने। और कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपको अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान देने होंगे। प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं कि आपको पावर पॉइंट बनाओ, इट्स जस्ट दैट कि जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होगे उसके पीछे आप उनके जवाब लिख सकते हो, और डेमोन्स्ट्रेट करना इज द मेन की, दिस इज द की, वो आपको पूरी करके दिखाना। Yeah. So it's good to hear that you're working on ideas, Kurat. I'm really excited to have you guys there. कोई आइडिया नहीं भी होता ना परेशान हो। सोफिया ने बहुत स्ट्रेस किया गूगल सर्च का, तो प्लीज गूगल सर्च जरूर कीजिएगा। एंड जिस तरह हमने बताया, मेंटोर्स होंगे हेल्थ केयर से भी, गेमिंग इंडस्ट्री से भी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको और लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा, हम सारे भी होंगे। So if any of you wants to meet us as well, तो now is your chance. Please come on Saturday. कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो आ जाएं। I assure you, I will hold your hand and I will take you through the entire thing. और मैं खुद समझाऊंगी कि किस तरह करना है। और हमने बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के लिए ब्रेनस्टॉर्म किए हैं। We've worked so hard on this and I can't wait to get you guys to experience the entire cycle जो अभी तक हम सिर्फ कराची में कर रहे थे। It's time guys, Lahore, it's time to show your power. और सो अब ये है कि डिस्कॉर्ड पे किसी ने कहा था कि चैनल्स बनेंगे। चैनल्स नहीं बनेंगे क्योंकि अब आप हैं ही इन पर्सन। यू शो अप टू एम लैब्स, आपका सारा काम वहां होगा।
You will have one channel out of thin air Lahore 2023 जिसमें सारा कुछ होगा. तो कोई भी questions है please वहां पे डाल दें. हम अभी आप कल पूरा दिन है, आज रात है, जब जो मर्जी डालना है डालें. We'll be there for you. जो सवाल हैं मुझे अलग से मैसेज करना चाहते हैं मुझे अलग से मैसेज कर दें. I will be available for you guys. एक सवाल आया है कि Yeah. हमें फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों पर काम करना होगा या किसी एक पर कर सकते हैं. आई किसी भी एक पर कर सकते हैं. यू नो लाइक एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, ये सारा कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है कि इनने थीमेटिकली इस तरह किया हुआ है. बट फैमिली प्लानिंग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ आती है, इतनी ज्यादा चीजें आती हैं, finances आते हैं. So but you really need to just work on one, so you don't have to include everything, all the areas or any associated outcomes of these two initiatives or whatever you want to call them. उसका भी आप काम कर सकते हो. Again, जो सोफिया ने दोनों examples दी थी, that were not family planning and reproductive health per se, but they had elements of that, और जिसके अंदर आप knowledge generate कर रहे थे. Serish ने लिखा है can we use something from our own like cardboards etc. I don't yeah you can, but it should not be that high profile. For instance, if you guys come in with a proto इसके अंदर लाल I don't know चार्ट पेपर कुछ बना हुआ है और नीचे आपने कार्डबोर्ड से कुछ चीजें बनाई हैं, फाइन बाय अस. हम बेसिक दे देंगे आपको सारी की सारी स्टेशनरी. However, if you want to use like I don't know, make a box plastic का तो plastic ले आओ. I don't know, that's entirely up to you. But the only rule is nothing computer generated, nothing high profile, very simple stuff. Go ahead and use them. Yeah, and you can also actually ask us when you're buying them कि आपको लग रहा है like send Ramsha an image से कि मैं ले आऊँ, like कोई confusion है या you know, and so I think that will also time limit वही है guys कि मतलब 2 दिन है at the end of like वो second दिन पे आपकी evaluation होगी. So मतलब उसके बाद भी अगर काम करना है घर जाके कर लेना, but उसका कोई फायदा नहीं होगा. हम तो दूसरे दिन पे ही जज करेंगे. हाँ, ये इस तरह की टीचर्स होती है कि क्लास में काम करो, लोगों होमवर्क करना तो कर लेना, कोई मसला नहीं है. नहीं यार टाइम लिमिट एज इन उसके बाद संडे के बाद तो नहीं. हम नहीं उसके बाद नहीं है. हाँ, उसके बाद नहीं, उसके संडे तक. हाँ. या वो भी संडे को you need to present your game in a playable way. तो आपके पास अगर जो भी आपने कार्ड गेम बनाई है तो you go out there in front of jury or judges and you play the game, explain it to them कि गेम में हो क्या रहा है. So you do that. Yes. Yeah. Thank you. Sophia. I'm glad you understood it. Ali, Ahmed ने पूछा I want to ask one thing. और फिर अहमद ने आगे कुछ कहा नहीं है. अहमद इस वर्ड का क्या मतलब है? अहमद मलिक. हाँ. अहमद मलिक. हाँ, उसने पहले कहा मैं बोरिया बिस्तरा लेकर आ रहा हूँ और फिर उसने कहा I want to ask one thing. मतलब भला पूछ ही लेते तुम. Ahmad Malik for everybody. हाँ. Maybe he's typing. I don't think there are any questions. I can see there must be a lot of confusion. जो मुझे लग रहा है, वरना सवाल मेरे ख्याल से गोली उतना आ रहे होते. जो भी आप लोगों के मसले हैं, जिस तरह सोफिया रमशा ने कहा, हमारा एक चैनल है, जस्ट उसके अंदर पोस्ट करते जाएं. हम आपसे कल भी राब्ते में रहेंगे. परसों तो आप सब आई एम होपिंग कि आ ही रहे हैं. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम 2 दिन मजा करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we come up with very interesting ideas and very practical solutions to problems that we face or that are a part of society. तो ये चीज बहुत जरूरी है. And yeah, that's about it from our end, I guess, Sophia and Ramsha. Perfect. Thank you guys. बस ये है कि जो confusion है कोई मसला नहीं है, सवाल पूछें, आ जाएं, show up. आपके पास हम पकड़ के नहीं रखेंगे. नहीं समझ आया तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी. and you'll always have the option to opt out, but please do show up because इतना अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा 2 दिन labs के अंदर काम करने का and meet such nice people from the industry and the healthcare industry. So that's all from our side. Questions है, please do send them. Orientation जिसने नहीं भी attend की, बाद में join किया है, orientation अभी पूरी जो है वो live हो जाएगी on the same link, so you can just start from the start.
एंड जो ये गाइड है ये अभी आपके साथ शेयर हो जाएगी डिस्कॉर्ड पे. थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर योर टाइम. बाय बाय. सी यू ऑन सैटरडे 9 AM sharp. बाय बाय. Bye bye guys. See you. Allah Hafiz. Yasir.